लचीलापन और टीम वर्क दिखाया है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन उतनी ही प्रेरणादायक और सार्थक। समाधान उपाय NSS IIT दिल्ली के साथ एक इनिशिएटिव है जो पिछले 6 महीनों से लगातार प्रयास और समर्थन के साथ आगे बढ़ रही है। आज हम इस यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं। इसके समापन समारोह या परिणाम समारोह हम कर सकते हैं। आप सभी की मेहनत और सहयोग से यह पहल सफल रही है और इसके सकारात्मक परिणाम आज हमारे सामने हैं। आज का दिन केवल समापन का नहीं, बल्कि उपलब्धियों को मनाने और योगदान को सराहने का दिन है। अब हम कार्यक्रम के सबसे प्रतीक्षित चरण पर पहुंचेंगे। यहाँ हम सेलिब्रेट करेंगे आइडियाज, इनोवेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आग्रह करूंगी हमारे मेंबर से कि वो आए और दिया लाइटिंग सेरेमनी स्टार्ट करें। बहुत ही शांति करने से पहले हम मां सरस्वती के आशीर्वाद देकर इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब मैं नोएडा सेंटर के विद्यार्थियों को आमंत्रित करती हूँ कि वो मां सरस्वती को समर्पित एक सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दें। कृपया मुस्कान और सुमन को मंच पर आमंत्रित करें जो इस मनमोहक प्रस्तुति की शुरुआत करेंगे।
respected chief guests, jury members, mentors, members of UPAY and students from different colleges across here. A very good afternoon to all of you. It is said that service to mankind is service to God. Today, I have the honor of introducing a group of individuals who live by this principle every single day. National Service Scheme, IIT Delhi. At the heart of NSS lies a powerful motto, not me but you. These four simple words represent a profound philosophy that we put into practice across 6 different domains. Those 6 domains are education, health, environment, society, innovation, and animal welfare. Apart from that, we have around 15 plus projects in these domains, 20 plus collaborations with different NGOs, 200 plus active volunteers, and more than 65,000 plus hours of service done by our volunteers. In line with this spirit, we also organize Kaizen, our social fest, which brings together people from all walks of life to celebrate and work towards the social change. It is our way of showing that when we all come together, even small steps can lead to very big impacts. It is a reminder that we are part of something much larger than ourselves. It underlines the importance of selfless service and the belief that the welfare of individual is ultimately dependent on the welfare of society as a whole. We are so happy to be here today for Samadhan, our national social hackathon. This is a big event part of Project Navyukti under innovation domain of NSS IIT Delhi, and we are so glad to be collaborating with UPAY NGO. UPAY has worked really very hard for last 3-4 months with us, and a huge thank you to all the participants, jury members, and NSS and UPAY team for bringing Samadhan till here. Thank you. Thank you, Kalyani, for your speech. I would now like to invite Ms. Mithila ma'am from UPAY to introduce audience about their initiative, their work. Welcome, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon to everyone. Good afternoon, ma'am. So I'll briefly take you through the journey of UPAY. What does UPAY do? Where did it start? And how we are placed in the country at present. So UPAY, if I talk about the organization, it started around 15 years ago from today. We are sitting in 2026 now. Happy New Year, everyone. And we have already completed 15 years of this journey, and this is the 16th year beginning for the organization. So why UPAY? Because every child deserves a dignified childhood and equal opportunity. When I talk about the organization, it started with a small village in Modha, Nagpur, and from there to present, we have 46 learning centers all across the country, with the latest one operational in Meghalaya, Garo Hills. We have come a long way from 2010 to 2025. So UPAY works on a 3-pronged approach, where one, we first believe in engaging the communities, second, we believe in educating, and then empowering them. When I talk about the engagement phase, here we try to engage with the communities by spreading awareness in the communities through various health camps, conducting sessions about the importance of education and why their students should be a part, they should also have access to education. Because of course, right to education is our constitutional right and every child deserves it. There are other health camps which we conduct on a quarterly basis. We conduct surveys and we also take care of other things which are needed in the community in the engagement phase. After we have developed some kind of engagement, we move towards the education,
where through our initiatives of Reach and Teach and Food Pathshala, we try to bring education closer to these communities. So हमारे दो initiatives, Reach and Teach and Food Pathshala. When I talk about Food Pathshala, that is an initiative where we are dealing with the slum children. बच्चे जो सड़क पर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, उपाय बिलीव करता है कि अगर वो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो क्या स्कूल्स उन तक नहीं पहुंच सकते? इसी कॉन्सेप्ट के साथ फूड पाठशाला का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, where we believe that let's replace begging bowls with books. The third phase is the empowerment phase, where we not only try to educate them, but after a stage, we try to empower them by giving them equal opportunities of livelihood. Where, when I say equal opportunities of livelihood, I believe that we actually try to foster an environment where through different skill development initiatives, say for example, swing classes, कंप्यूटर क्लासेस, हम उनको कुछ सिखाते हैं ताकि वो अपने लिए कुछ एक लाइवलीहुड अर्न कर सके, अपने लिए भी और अपनी फैमिलीज के लिए. If I talk about the impact numbers, you can see that we have already impacted 2,33,879 lives till now. I would like to share some success stories with all of you. These are few of the students from UPAY who began their journey when they were very small, and right now they are working with some MNCs. Someone is becoming a doctor. So if I talk about the girl in the white t-shirt, she is right now working with an MNC in Bangalore and earning a whooping package of 35 lakhs per annum. There is another girl in the bottom. She is a national level taekwondo player, Sanjeevani. Then we have another girl who's presently preparing for MBBS and she's aspiring to be a doctor soon. So these are the success stories which UPAY has created in the long journey of 15 years, and here we stand together, again treading the path where we will achieve new skies. That's all from my side. Thank you so much everyone. Now I would like to call Mahendra Shukla to please come up on the stage and talk about Samadhan. Dear audience, our chief guest for the event has arrived. Huge round of applause for our chief guest. Welcome ma'am to Samadhan.
bringing this amazing initiative along with NSS IIT Delhi. We are grateful. Moving forward, I would like to invite our guest of honor, Srimati Dipali Ma'am, IPS, Director at Ministry of Tribal Affairs. May I have a huge round of applause, please? Sri Dipali Ma'am has been working tirelessly for the welfare and development of tribal communities across India. Please join me in welcoming her. Ma'am, I request you for your address. So, how's the Josh? Ma'am, it isn't high, right, ma'am? So, ma'am says it will be high. So, how's the Josh? Okay, that's good. A very good afternoon, everyone. A little speechless, I must say, because the inspiration is sitting right in front of us. So, it's a pleasure being here and an honor. Ma'am, you are a beacon of light, and thank you for gracing this gathering. And we are actually, I won't take much time because we would want to hear from ma'am. And secondly, the reason why I'm here is because of UPAY and because of Varun. A decade ago, I was posted in Nagpur as DCP, and I had seen their work, the Footpath Shala. I've seen it personally, and I think they started very small, and today they have touched lives of almost 2,33,879 people. Which is a big number. And how such small incremental changes can bring a big difference is what UPAY tells us about. And I asked Varun that what do I tell? What do I tell this gathering? Because already there's Kiran ma'am, there's Rajeshwari ji, there's Varun himself who's done such good work, such extensive work in this field. But I would just want to tell you all that small things can bring in a big change. Recently, I visited a school, an ashram school in Palghar district in Maharashtra. And there was this NGO. I thought ashram school NGOs would be interested in teaching the children. That's how they would kind of get associated and focus more on teaching the children or do something about education with the students. But interestingly, this NGO came up with an idea of teaching the mothers. So what they did is they got in touch with the children and they gave the children this task of teaching the mothers numbers 1 to 100, because there are many illiterate mothers belonging to tribal communities in Palghar. Teaching numbers, teaching alphabets in Hindi, in Marathi, and helping them to sign. So in 3 months, this small NGO could make a difference, and there were 300 women, illiterate women, mothers of the students, who were able to sign and count from 1 to 100 and know alphabets. So isn't that amazing? So this is a very small NGO which could do, and without any investment, could bring in such big change. So each one of you here, and each one of us rather, when we are inheriting a world, this generation, the coming generation, we need to contribute something to this world. And we don't need to do big things, we should start small and be the change that we want to see. With this, I would like to thank you all for giving me this opportunity to speak to you all, and I'll be in touch with you because I believe in the fact that it is not just one-time association. I've seen UPAY for almost a decade, and through UPAY, I'll be in touch with all of you. And as it was mentioned that now I'm on deputation with the Ministry of Tribal Affairs. The 8% of our our country's population belongs to the tribals. So we would want your help. There are so many initiatives that the ministry is running. We would want your help in each sector, be it education, health, livelihood. And I'll get in touch with each one of you, and we will see to it that there is change and there is development in its true sense. Jai Hind. Thank you all. Thank you so much, Srimati Dipali ma'am, for your powerful and inspiring words. To felicitate Srimati Dipali ma'am, I would like to invite Professor E.K. Pani sir, Dean of Student Affairs, IIT Delhi. Sir, please come.
you, sir. Moving forward, I would like to invite Dr. Rajeshwari Narendran Ma'am, Director of NTPC School of Business, to please come forward in welcoming and introducing our chief guest, Srimati Kiran Bedi. जिस बेटी पर देश को अभिमान हो, हर महिला का जो मान सम्मान हो, उस पर क्यों ना हमको अभिमान हो। डॉक्टर किरण बेदी, आपका परिचय देना मेरे लिए सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है मैम। I remember you coming to small programs at Udaipur for meeting the tribal girls, rural women to be empowered. आपको तब से जानती हूँ, एडमायर करती हूँ, और आपको मैं ही नहीं, शायद देश की हर बेटी एडमायर करती। बहुत मुश्किल है आपको कुछ शब्दों में बांधना, but she is the 24th Lieutenant Governor of Puducherry. She served the United Nations as a civilian police advisor in peacekeeping operations. She has a PhD from IIT Delhi. You are in the alma mater, ma'am. And an author of several books, latest being Fearless Governance, now translated in Hindi, Tamil, Marathi, Malayalam, and based on ground realities as she saw in serving the Lieutenant Governor of Puducherry. And wonder, she had been the Asian tennis champion. Ma'am, so proud of you. And winner of Gallantry Award, winner of Magsaysay Award, also known as Asia's Nobel Prize Peace Award, has a biopic on her life called Yes, Madam Sir. And made by an Australian, founded two foundations, Navjyoti and India Vision Foundation, which serve the underprivileged and rural urban areas and in prisons for the last 30 years. Past surveys and by polls by Reader Digest and Week Magazine rated her as India's most trusted and admired woman in India. What a powerhouse you are, ma'am. So privileged. And now I wish that if we can quickly play a quick, AV that we have. Do that. About her birth, about her life. आपकी जिंदगी में कितनी सारी चीजें आपने की हैं, आजकल ब्रेक। This is the story of reform. This is the story of courage. This is the incredible story of Kiran Bedi. Born on June 9th, 1949 in Amritsar, Kiran Bedi rose from humble beginnings to become a symbol of fearless public service. Her parents' quiet sacrifices shaped her resolve, carrying her to her first great triumph, Asian tennis champion. In 1972, she broke barriers by becoming the first woman ever to join the Indian police services, stepping boldly into a world dominated by men. As an officer in Delhi, she pioneered a humane yet fearless style of policing, confronting crime while healing its causes of drug abuse, illiteracy, and vulnerability. She earned the affectionate moniker Kiran Bedi after finding the car of PM Mrs. Indira Gandhi's office, an act that made headlines for its fairness and her belief that no one is above the law. At Tihar Jail, her vision as IGP transformed one of India's toughest prisons into a center of reform. Education, meditation, and rehabilitation transformed a jail into an ashram, earning her the prestigious Ramon Magsaysay Award. Beyond the uniform, her mission continued. Through the Navjyoti India Foundation and India Vision Foundation,
she worked to uplift communities, empower women, and educate children. As Puducherry's Lieutenant Governor, she made governance personal, cycling through neighborhoods, connecting with citizens, and championing transparency. An officer, a reformer, a guardian, a trailblazer. Across every chapter, she carried one truth with her, that leadership is not a position, it is a practice. Kiran Bedi's life story is a legacy that continues to rise, lighting the way for those who dare to lead. Ma'am, we all are eagerly waiting to hear from you. Most welcome, please. Can we have a round of applause, a big one for that? No, I'll go in the center. Hello. We'll be right in the center. The heart of you, all of you, the heart of you. You all spread out so much anyway, but most welcome. And these lights are blinding. Yeah, this is better now. Thanks for making see you directly. Good morning and a very happy new year to all of you. I want to tell you what brings me here today, while I thank my IIT, my own institute, for always keeping me, not forgetting me at all. Some alumni meeting or some meeting like this events, they keep bringing me back. So I want to thank all the faculty who's made it possible. Thank you so much. I know the NSS, the word was NSS, right? You're all NSS? You're all NSS? Or can be more? Are you NSS? National Service Scheme? And more also. How many in the NSS? Raise your hands high. Yeah, quite a lot, quite a number. Well, others could be. Are you a bar on, a cap on how many you can recruit? Then do you know what NSS stands for? NSS, I've seen this organization grow. I was an NCC cadet. At that time, when I was doing NCC, NSS was not there. National Service Scheme wasn't there. It's during my time I saw a whole new contingent when we were doing Republic Day parades those days. The NSS came and gradually they wore a greyish jacket and a white suit. Is it still the same uniform? So they used to walk the Republic Day parade. So NSS also became a part of the Republic Day celebration. I have seen the birth of NSS. So when this invitation came to me, I came to an organization I had seen grow, and I understood the value. And I understand the potential of this organization. So it's just that which brings me to you on my Sunday afternoon. It was quite a pull-up for me. I rearranged my Sunday and came to you out of the love for my institute calling me, with the great respect, and secondly, what you all stood for. And third, I wanted to link you with those who are not NSS. Understand, why should every student not be in NSS? Why could every student not be in NCC? Because I'm a product of the NCC. It's NCC, sports, and the best of the academics, which are making me stand self-reliant till now. Till now, it is I owe my self-reliance and whoever I am to these three. Of course, my grooming. My parents gave me the grooming. But my education through school to IITs, etc. And then my sports, which from national championship to the Asian championship. These two things really grew, and then after that, the Indian Police Service. So friends, I want to know, and I know you're all aspirants for somebody like her,
to be in the All India Civil Services. What is NSS? I will tell you a little story. How my NCC, how my sports, how my education continue to transform communities. I did not have the money. I, as a government officer, did not have I was not a corporate house which had a corporate social responsibility to fund this education of these street children. But you saw in my introduction that I'm working with street children for the last 40 years. 40 years. And I will tell you how easy it was and how easy it is, provided you do the funding, and which I did. What did I do? And which you all can do all your life, and that's why I'm here, because every one of you understanding this mantra will be a transformed, contributing leader in this country. I was today reading, there was a paper here, last night I was reading the UNICEF, I have a paper. And it was just exactly what you needed to be shared. It said, it's a UNICEF article, friends. And it came on my, I think I was reading it is dated 20th November, but I somehow got it printed. It says, despite poverty gains, 206 million Indian children, 206 million Indian children lack access to education, health or nutrition. It's a UNICEF story. 206 million, it's almost the population, little less than American population. It's a country's population. And many countries, maybe more population than entire Europe and Latin America. 206 children of ours are still lacking access to education, health or nutrition. Or, it's not all, any one of those. It's not say all of them they're lacking, but they are lacking access to education, health or nutrition. And I'll tell you my story of 40 years ago. How it happened. And how you, all of you, can copycat me. Because there's no patent on this. And I'm here as an elder to pass on this legacy and experience to you. How did it begin? I was a deputy commissioner of police for a district in North Delhi many years ago. And I used to walk my streets every day, which public servants don't. Public servants don't. The IAS and the IPS are all office bound. They're more office bound. They come straight to the office, start dealing with very many files. They have valuable files, they got valuable work to do, but they don't go to the field. If they are field officers, they don't go. I've not seen that. Exceptions go, but they don't. I had a wonderful habit because being a sports girl, an NCC student, etc., I was very field oriented. So I had a habit, every day morning, start my day early and go to my field. And which is my field? My field was police stations. And I had about 19 police stations in one of the districts of Delhi. So morning 8 o'clock, sharp 8 o'clock, I will leave and go straight to a police station without letting my police stations know which police station am I coming to. My wireless would not say on my way. So as I would drive down, all of them, my police station people, were on roll calls. Now, they were all attentive because never know when I'm dropping by. So what did happen? Everybody was very attentive. But what was I doing going there? I was not going around looking for what's wrong. I went to learn, hear, see, feel for myself how my work is going on. And then, in those areas, my police constables would tell me the problems because I would go as a learner, as a person to learn. And I was a young girl at that time, in my 30s. I had very little field experience. So I was now learning on the job. And I would be, best way to learn is listen, see. Now they would tell me, and I would only think, aaj naya kya hai? Or problem kya hai? Batao? So I would ask them, problem batao. मुझे तारीफ मत बताओ मैंने ये किया मैंने किया वो तो उन्हें करना है मुझे एक समस्या बताओ जो मैं समाधान कर सकती हूँ एज अ सीनियर तो मुझे एक ने बोला मैम एक एरिया है जहां हम पुलिस वाले जा ही नहीं सकते मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते मैंने कहा कहते हैं मैम वहां जब
वहां बहुत नशा बिकता है और बच्चों की बहुत भीड़ है और वो सारी माइग्रेंट पॉपुलेशन है। ये रेड फोर्ट के ऊपर सारी जो यमुना पुष्ता है उसकी लाखों में वो झुग्गियां हैं, तब अब हटा देगी, कॉमनवेल्थ गेम्स में हटा देगी। ये लाखों में झुग्गियां हैं, वहां की औरतें हमें आदमियों को घुसने नहीं देती और मैम वो नशा खूब बेचती है और बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने देती। मैंने कहा स्कूल तो नहीं जाने देती क्योंकि मैम उस स्कूल को जो वो भी बच्चे नशा बेचते हैं और वो आमदन बन गई है उनकी कमाई के लिए, इसलिए कोई भी मम्मी डैडी स्कूल में नहीं, और स्कूल है भी नहीं तो स्कूल भी नहीं भेजते और उनके लिए इनकम भी है, वो भी नशा बेचती हैं, बच्चे भी नशा बेचते हैं, चोरियां भी करते हैं और गुटखे भी खाते हैं और मैम वो हमें घुसने नहीं देती और जैसे हम घुसे हमें कह देंगे हमको छेड़ा तो हम जाते नहीं हो। लेकिन सारा क्राइम डेन था, इट वाज अ डेन ऑफ क्राइम। सी ओनली बाय फाइंडिंग आउट वेयर कैन आई गो, सी व्हाट डिड आई डू, डिड आई से oh we'll ask for a report, we'll ask for a report or we'll report to the higher authority or I report to the social welfare and education. I didn't do that. I went into that area. I said आप मेरे साथ चलो, हम इकट्ठे चलते हैं। तो मैं आगे आगे, ये आदमी लोग मेरे पीछे पीछे, तो हम झुग्गियों में चलने लगे, उन झुग्गियों में जिनका नाम था यमुना पुष्ता की झुग्गियां। उन झुग्गियों में हम चलने लगे, पैदल चलने लगे, सारे हैरान हो गए, पुलिस, लेकिन एक आगे औरत है, औरत के खिलाफ क्या शिकायत लगाई। तब मैंने उन औरतों से बात की कि आपका समाधान क्या है, ये नशा बेचना कब करोगे बंद, और बच्चों को स्कूल कहाँ भेजो। मैम स्कूल नहीं है, कहाँ भेजे, यहाँ तो चोरी है, पुलिस वाले आते हैं, पैसे खा जाते हैं, वकीलों को देते हैं, जेल जाते हैं, जमानत के लिए पैसे होते हैं, हम तो अब वकीलों की फीस के लिए हमको नशा बेचना पड़ता है, अब जेल से भी कैसे निकले। तो बात तो सही थी, इट वाज अ सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ क्राइम। सर्कुलर, खरीदना है, बेचना है, बचना है, वकील को फीस देनी है, घूस भी देना। तो मेरे पीछे पुलिस वाले भी सुन रहे हैं कि मैम ये आते हैं घूस लेके चले जाते हैं। तो मैंने कहा सुन लो क्या कह रहे, सच बोल रहे झूठ रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सही बात था कि वहां कोई पास में स्कूल नहीं था क्योंकि ये वोट बैंक नहीं था। ये जो सारी थी माइग्रेंट पॉपुलेशन थी, किसी के पास इलेक्टोरल कार्ड नहीं था और किसी कोई वोट बैंक नहीं था, इसलिए पढ़े रहे जहां से पढ़ रहे, किसी को कोई भी चिंता नहीं थी कि यहाँ पर कोई लोग ह्यूमैनिटी बसती है। और बस्ती थी रिक्शा वालों की, बस्ती थी टांगे वालों की, बस्ती थी मजदूरों की जो टाउन हॉल, चांदनी चौक, करौली बाग, यहाँ सब लेबर करती है। कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई दूर दूर से आ रहा है, यहाँ झुग्गी छाप दी, बैठ गए, झुग्गी भी खरीदी एक दूसरे से। What do? I don't have the budget for a school. I don't have the budget for health. I don't have, right? I don't have, how many people can I arrest? और मेरा थाने वाला कुछ गिरफ्तारी भी करता था, थोड़ी सी गिरफ्तारी हुई, इतनी सारी क्योंकि गिरफ्तारी भी दिखा दी। मैंने कहा ये ऐसे नहीं चलेगा, ये क्राइम की सर्कुलर इकोनॉमी नहीं चलेगी, इसको हमको तोड़ना है। तो तोड़ना कैसे? तो हम लोगों ने सारे उपाय शुरू करे, औरतों को भी इकट्ठा किया, बच्चों के लिए भी करा, जो जो संविधान थी वो करा। और यू वोंट बिलीव इट, हम लोग, मेरी संस्था नवज्योति वाज बोर्न इन 1988, 5th of January, which I'm celebrating my foundation day tomorrow. So I'm celebrating. So 40 साल की तपस्या, क्योंकि 86 में इसको नवज्योति नाम मिल चुका था, लेकिन 38th ईयर हम लोग कल चिन्मय मिशन में 11 बजे नवज्योति का फाउंडेशन डे मना रहे हैं। क्या हुआ इतने साल, क्या हुआ, क्यों हुआ? मैं फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं और ऑफिसर कहते हैं हमारा काम नहीं है, हमने लिख के दे दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। मैंने किसी को नहीं लिखा, मैंने किसी को नहीं लिखा, मैंने किसी को शिकायत नहीं की। मैंने ये देखा मेरे पास हिम्मत क्या है, और मैंने अपनी हिम्मत देखी, मेरे पास यूनिफॉर्म है, वर्दी है, और मैं किसी से कुछ मांगू मुझे मिलेगा। मैंने टाउन हॉल के मर्चेंट्स को, चांदनी चौक के बड़े बड़े से सिलाई मशीनें दो, मुझे बच्चों के टेंट लगाओ या स्कूल लगाओ। और हमने 2 साल में गली स्कूल खोले, 200 गली स्कूल गलियों में लगा। क्या किया मैंने? अपनी ताकत को पहचाना, आर्थिक ताकत को नहीं, अपनी पोजीशन की ताकत, पोजीशन की ताकत को
पढ़ाया और हमने सर्कुलर इकोनॉमी को तोड़ दिया। बच्चे स्कूल जाने लग गए, नशे बिकने बंद हो गए, नशा मुक्ति केंद्र भी खोला और वहां पर फिर टेंट भी लगे, स्कूल लग गए और फिर हम लोग स्कूलों की मेन स्ट्रीमिंग करने लगे। आपको पता है उनमें से कई बच्चे आज हमारे टीचर्स हैं, उनमें से बच्चे कई इंजीनियर हैं, फिर हमने यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से भी पार्टनरशिप्स की, सब मांगा। ये कोई मांगना थोड़ी था, ये तो अपना इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने के लिए लार्जर गुड किया। अब मुझे बताओ, क्या इस हिंदुस्तान में हर ऑफिसर अपने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं? बताओ, कर सकता है कि नहीं? कर सकता कि नहीं? वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इलाके में नहीं जाता, वो महसूस नहीं करता, उसका दिल दर्द उठता नहीं है, वो अपने देश के साथ लिंक नहीं करता, वो नहीं समझता है कि मैं इतना ताकतवर हूं, ये मेरा जो सरकारी पोजीशन, वर्दी पहनो या नहीं पहनो, आपकी पोजीशन ताकत है। और आपको पता है आपकी भी ताकत है। जब आप संगठित होते हैं, मिलके काम करते हैं, आपकी ताकत बनती है। और ये ताकत मैंने 40 साल की पुलिस सर्विस में इस्तेमाल की, हर दिन लार्जर गुड के लिए। कहीं कभी महिलाओं को जोड़ा, कभी बच्चों को जोड़ा। स्किल जो आज नवज्योति स्किल्स ट्रेनिंग एकेडमी चला रही है और हजारों बच्चों को शिक्षित कर रही है, ट्रेन करती जा रही है, लाइफ बनती जा रही है। और मैं उनको नया साल मैंने उनके साथ, तो मेरा मतलब ये मेरा फ्यूचर भी बन गया, मेरा प्रेजेंट भी बन गया। मुझे रिटायरमेंट कितने साल हो गए, लेकिन मुझे एक भी मिनट, एक भी दिन अपने लिए नहीं मिलता है, क्योंकि संस्थाएं मेरे से इतने डिमांडिंग है कि आज इधर इवेंट है, इधर एक क्लास है, आज ये प्रोजेक्ट है, आज ये कन्वोकेशन है, वो सारा दिन लगा रहता है। जनवरी मैंने पहला साल कोई पार्टी में नहीं बिताया, मैंने उन बच्चों से बनाया। और उन बच्चों ने मुझे क्या सिखाया, सुनाया। मैंने उनसे पूछा पढ़ते कैसे हो, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम हो, स्टूडेंट हाइब्रिड है। तो बोले मैं, उसने एक भी बच्चे ने बुलाया, मैं हमारे पास है, किसी ने शिकायत नहीं की, मैम इतना फोन है हमारे पास, हम उसको पढ़ते हैं बस। तो मैंने कहा कितने बच्चे पढ़ते हैं? मैम 6 जने। मैंने कहा इतने से फोन पे, आईफोन पे आप? हाँ मैम, ये जो फोन है ना, हम अपने पिलो एक तकिए पर रखते हैं, तो सारे जने उसको देखते हैं और उससे सीखते हैं और उससे पूछते हैं, और अगर कुछ समझ नहीं आता ना मैडम, तो हम अपने मास्टर जी को फोन करते हैं और वो हमें समझाते हैं। कैन यू बिलीव इट? दीज चिल्ड्रन, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। ये मेरे बच्चे झुग्गी झोंपड़ी के जो आज बवाना में रहते हैं, सारी बस्ती वो चली गई थी, वहां झुग्गी झोंपड़ों की बस्ती सारी, मेरी जो झुग्गी, मैंने यमुना पुष्ट वहां चली गई, यमुना पुष्ता थी बवाना में। तो मैं बवाना में जाती हूँ, मुझे 1.25 घंटा लगता है रोज उधर जाने में, और उसमें जाके मैं जब उन बच्चों को मिलती हूँ, इतने लायक बच्चे बन चुके हैं, इतने लायक बच्चे बन चुके हैं कि वो आप हैरान होंगे कि किस तरीके। अगर किसी ने आकर ये तमाशा देखना, तो कल 11 बजे चिन्मय मिशन में आकर देखना, हम प्रेजेंटेशन जब देंगे इन बच्चों की, और वो आएंगे भी और बेनिफिशियरी। फिर एक ऐसे ही मैं जा रही थी, तो मैंने कहा गाड़ी किसकी है? गाड़ी, काली गाड़ी खड़ी थी। मैम ये गाड़ी ना अल्तमश की है, अल्तमश की। मैं क्या अल्तमश? कौन है अल्तमश? वो अल्तमश मेरे साथ खड़ा था, फोटो खिंचवा रहा था मेरे साथ। मैं क्या मैम, मैं अपने इस नवज्योति में रेमेडियल स्कूल का ही पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमने फिर रेमेडियल प्रोग्राम शुरू करे कि स्कूल के बाद स्कूल, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो सब्जेक्ट की कमी आ जाए, वी विल डू रेमेडियल स्कूल। और वो रेमेडियल करते थे और बच्चे लायक रेमेडियल करते करते फिर कोर्सेज भी चलाए। ये तो प्रोग्राम, जब आप संस्था खोलो ना, आप हर साल नया चीज ऐड करते हो। जैसे हम लोग सारी ऑनलाइन बना रहे हैं ट्रेनिंग, ताकि ये देश दे लैंग्वेजेस भी सिखाए। सो नवज्योति इज नाउ मूविंग टू बिकम एन ऑनलाइन स्कूल। वो होता है तरक्की। लेकिन मुझे अल्तमश की बात आई। मैंने कहा गाड़ी किसकी है? मैम ये गाड़ी अल्तमश की है। मैंने कहा अल्तमश तू कहां से करा? मैम मैं नवज्योति का ही पढ़ा हुआ हूँ। मैम मैंने कोई भी कोर्स यहाँ छोड़ा नहीं। जैसे फिर उनकी जो डायरेक्टर थी नीतू शर्मा, उसने बोला मैम ये अल्तमश ऐसा स्टूडेंट है, जो कोर्स हम लोग नवज्योति वहां शुरू करते थे, ये हर कोर्स को करता था। चाहे सिलाई का ही कोर्स हो, चाहे मेहंदी का भी कोर्स हो, ये हर टाइम हर चीज सीखने को तैयार होता था और ये सीखता गया। और इसने सीखने के बाद इसने क्या किया, एक चाय की रेडी लगाई। रेडी में इसने कमाया, तो फिर से एक जूस की दुकान खोली,
फिर से जूस की दुकान से कमाया, फिर से एक और अपना कोई व्यवसाय खोला, फिर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हुआ, फिर वहां जाके किसी की फैक्ट्री में काम करने लगे। काम करते थे, कमाते कमाते आज वो साइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहा है वहां पर, और आज उसकी काली गाड़ी है। ऐसे बच्चे कहां से कहां शुरू हुए, किस चीज का असर है ये? हजारों आईपीएस ऑफिसर्स हैं, हजारों आईएएस ऑफिसर्स हैं, हजारों ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हैं, हजारों प्रोफेसर्स हैं, हजारों नायक लोग हैं, हजारों कॉर्पोरेट्स हैं। क्या हर जना अपना अपना क्षेत्र इन्फ्लुएंस का बढ़ा नहीं सकता? कैन दे नॉट एक्सपैंड देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस टू रीच आउट टू द पीपल, वेदर इट्स 1 or whether it's 10 does not matter. जब हमने शुरू किया था, हमने ये थोड़ी देखा था इतने सारे हैं, ये कैसे संभालेंगे, या मैं एक ही तो कर रही हूँ कि मैं एक ही तो हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? हमने कोई नहीं, किसी ने सोचा था मैं ही तो हूँ, मैं ही कर सकती हूँ। हम है ना, हम है ना। मैं इसलिए आपको बताने के लिए कि मैं थक गई हूँ अपने ऑल इंडिया सिविल सर्विस ऑफिसर्स को कहते कहते, अरे सुभाष बाहर तो निकलो, जाओ प्योरीफायर से हटो और जाके ये धुएं को सूंघो, तब आपको पता चलेगा क्या क्या करने की जरूरत है। और तुम बैठे हो प्योरीफायर में सीनियर ऑफिसर्स बन के। सिमिलरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले सब बैठे हैं अंदर, कूड़ा और झगड़ा बना हुआ है बुरा, कोई देख नहीं रहा। ये ऑफिसर्स आपने बनना है, इसीलिए ये मेरी पनीरी है, ये मैं पनीरी को मिलने आई हूं सिविल सर्विसेज की, कि कल जब तुम जाओगे अब ये मत बताना हमको किसी ने बताया नहीं कि हम ये कर सकते थे। आपको मैंने बता दिया आप क्या कर सकते थे, और हमने बता दिया कि हुआ है, और आपको मैंने बता दिया कि संभव है, और अब मैंने आपको ये बता दिया आपको करोड़ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना ओहदा चाहिए। और इसके लिए आप बिजनेस वर्ल्ड में हो या सर्विस वर्ल्ड में, हम सबके पास कैपेसिटी है टू डू मोर, टू एक्सपैंड आवर एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस। और आज एक्सपैंड करते करते जीवन बीता जा रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया बात है जीवन तरक्की करता जा रहा है। हर दिन अगर मैं पीछे करके देखूं, कल क्या नहीं मैंने क्या किया, हमने तरक्की की। तो तरक्की जीवन में रुकती नहीं है अगर आप एटीट्यूड बना लें। So you as students, what can you do? What can you do? Organize yourself. Whether you have a close by village school, whether you have a close by needy person, find out what can you do. You can give, you can contribute, you can speak, you can train, you can take a class, you can form a group, you can become a voice. You can. But सबसे important बात यह है ईमानदारी रहना। आज इस देश की बीमारी है ईमानदारी, कमजोर होती जा रही। अगर मैं करप्ट होती तो मैं वहां नहीं जा सकती, अगर मैंने उनसे पैसे खाने होते तो मैं वहां नहीं जा सकती, अगर मैं भी उस धंधे में उस एसएचओ को बोलती कि अच्छा जो तुम उतना कमाता है ना 25% मुझे भी भेजना, मैं क्यों जाऊंगी? मुझे भी इनकम आ रही, मैं घर वहां बैठी हूँ, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, मेरे की एरियाज में ये भी नहीं लिखा कि तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुमको ये डाला है। मैं क्यों निकली? क्योंकि मेरे अंदर एनसीसी थी, मेरे अंदर स्पोर्ट्स थी, मेरे अंदर ईमानदारी थी, मेरे अंदर एजुकेशन थी। आपके पास भी सब कुछ हो, और मेरे अंदर ग्रीड नहीं थी कि और भूख नहीं थी, मेरे अंदर सेवा भाव थी कि मैं इस सर्विस में आई क्यों, मैं देने आई हूं, लेने नहीं आई। सरकार मुझे दे रही है, मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं, जो सरकार दे रही है काफी है। उस जो मुझे सरकार, मेरा देश मुझे दे रहा है, मैं उसको मैक्सिमम वापस दूं। आज 40 साल हो गए, हजारों 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 स्टूडेंट्स स्किल हो चुके, पढ़ लिख चले और कामयाबी बन चुके, अपने अपने परिवारों को चला रहे। एक छोटी सी शुरुआत से, और कौन सी शुरुआत? एक आदत थी रोज जाके अपना काम की प्रॉब्लम को देखना, कहाँ है मेरी प्रॉब्लम और मैं अपने ओहदे से क्या कर सकती हूँ। और ये नहीं देखी मुझे इसके लिए इनाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मेरा तो कर्तव्य ही है, जो मैं कर्तव्य ही निभाऊं वही मेरा इनाम है। और वो खुशी है, वो क्या करती है, वो जब आप कर्तव्य भाव से आते हो आपको तंदुरुस्ती मिलती है, मानसिक वेलबींग मिलती है, आपको मेंटल वेलबींग के लिए कोर्स नहीं करना पड़ता।
Now we are doing mental, even Harvard is doing schools of well-being. Kyun? Arey, go to the root of your problem. Because you're leading a selfish life. And selfish life can be an unhealthy life. If you live an unhealthy life, if you want to go for well-being, you are leading, go to the root. NSS teaches you to be unselfish. NSS takes you to the grassroots. And NSS makes you think, what can I do for my country? And imagine, NSS भी इस देश में है, सिविल डिफेंस भी है, होम गार्ड भी है, ये तो काम है उनका, ये काम भी उनका, सिविल डिफेंस का भी है, कहाँ दिखते हैं वो, कौन इस्तेमाल करता है, सब उनके नौकरों, PMs बने हुए, सिविल डिफेंस PMs बने हुए, जबकि they should actually be on the ground meeting people. So friends, West is all history. What I'm giving you is not theory. And I'm not looking for applause. Because for me, my applause is what I do with myself every day. I self-applause. I don't ask for applause. I'm in the habit of self-gratification. If I am happy with what I've done, I'm happy. I have achieved myself. It's called growth mindset. With a growth mindset, with an old sense of belief. So whether you applaud, and if you applaud me for something wrong, I probably might be going away with the guilt. Okay, why am I getting this applause? I didn't deserve it. But if you applaud, then I know you are recognizing something which you may have heard or may have seen. But I thought I'd tell you directly, this is your potential. I am no different from you. I've done simple graduations, simple studies. I loved my school. I played. I didn't waste my time. I continue to use my whatever resources I had. My parents gave me, my school gave me, my IIT gave me. IIT was such a big boon for me. मैं PhD करना चाहती थी, but I could not be a full-time student. And the professors, Dr. Nadir, Dr. Anuradha Sharma, and others said, "आओ किरण, हम तुम्हें help करेंगे." And I did it part-time में काम करती, काम भी कर रही थी, part-time भी कर रही थी. मैंने MPhil भी की research methodology में because I had to pass that test. But it is because of my professors. I could do my PhD, and doing my PhD altered my way of thinking because I could write so much books because of my PhD. Because when you learn to research, you have to write. You know how to write. You know how to put things across. So friends, understand, मैं आपको यही बताने आई हूँ, जिंदगी में भूलना नहीं है. NSS के मेंबर बनो, NCC के मेंबर बनो, या अपने अंदर national service scheme लाओ. Once you do it, all your life you will not need counseling. You will not need mental health issues. You will be positive in your energy, because you're constantly giving. So आप गांव में, स्कूल में हो, अपने शहर में हो, RW में हो, किसी NGO के साथ हो, किसी apprenticeship में हो, किसी साथ internships कर रहे हो, because I get lots of students in my foundation to do internships. So therefore, आप intern में हो, there is a serious and research कर सकते हो. You can offer this as projects, go and read. और government की schemes बहुत ज़्यादा है आजकल. Go and audit the government scheme, understand the scheme, and see how it's functioning, and write a note. Write it on your, and share it in social media. ये नहीं देखो उसको कितने views मिले. ये नहीं, just write. Just write. You're making your own contribution. You're giving a self-expression. So अपनी आज value को realize करो. अपनी कीमत बढ़ाते रहो. इंसान वही अपनी कीमत बढ़ाता है जो अपने में रोज इन्वेस्ट करता है. मेरे लिए इधर आपके साथ आना पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑफ माय फ्यूचर है. यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. इस देश का अगर हर जवान, मैंने इस बार आज आर्टिकल लिखा है, and I've written to the authorities, please declare the year 2026 as year of the citizen. Responsibility. अगर हम लोग year 26 को, आज लिखा है मैंने हिंदुस्तान टाइम्स चंडीगढ़ के एडिशन में, and it's on my Twitter handle @Kiran. If you wish, you can click that and you will get the link to my article. And I've written how every citizen can be the citizen, one of responsibility. और अगर आज हम अपनी responsibilities पे आने लग जाएं, ये देश बदल जाएगा. लेकिन ये देश बदलेगा नहीं
क्योंकि हमारा यही पढ़ा लिखा स्टूडेंट जब ऑफिसर बनता है, काबिल से बनता है, वो घूस देने लग जाता है, घूस देते देते। व्हाट हैपेंड इन इंदौर? व्हाई डिड इंदौर सफर? Did the officers not know what's going on in Indore? Did they not know? And they're from top to bottom. The problem was known that places are getting to be poisonous and the water is getting adulterated. But where were the officers? That is why the municipal commissioner now has been removed. Why did he not know? Had he been walking the streets every day, meeting people, holding town halls, he would have known. And all this was avoidable. These only because ये काम ऐसा क्या कैसे करेगी जो मैंने आपको दिखाया, वो अपना काम नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से लोग की मौत कर रहे हैं। जो मर जाता है उसको कहते हैं ये 2 लाख तुरे, ये 2 लाख तेरे, ये 2 लाख। ऐसे एरियाज में जहां आप रह रहे हैं, आपको भी आवाज उठानी होगी as NSS or as citizens. If we treat 2026 as a year of the citizen and citizens' responsibility, it will be changed. Otherwise ये विकसित नहीं होने वाला। आपने देखना है 2047, you are the one जिसको भुगतना है या रिवॉर्ड लेना है। You are all going to suffer or get rewarded in 2047. Remember me when you are in 2047. I will watch you from heavens. ऊपर से देखूंगी आपको, आप रो रहे हैं कि हंस रहे हैं। अगर रोना है तो अभी से अपनी जिम्मेवारी मत निभाओ, और अगर हंसना है तो अभी से अपनी जिम्मेवारी निभाने लग जाओ। अपने टीचर से पूछो, सर व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन आई, और आई वांट टू डू दिस। आइदर गाइडेंस ले लो या अपना इनिशिएटिव ले लो, मिलके काम करो और लगे रहो। ये सोचते रहो कि मुझे अपना समय, हफ्ते में कुछ समय निकालना है समाज की तरक्की में, और साथ में अपना निर्माण बनाने के लिए कि जब मैं कुछ बनूंगा मेरे पास साधन भी होंगे, मेरे पास पोजीशन भी होगी, मेरी बात भी कुछ सुनी जाएगी, और मैं लोगों से कह सकता हूं कि मुझे दो, तो देंगे। क्यों ना करेंगे तुम? क्योंकि आप अपने लिए थोड़ी मांगे। मैं इसीलिए आया आपके पास। आप समझ आए? कोई समझे? समझे नहीं समझे? नहीं समझे? कोई जोश बड़ा कम है। समझे? अब समझ गए। सो आपको कोई कहे ना कहे, अब आपको खुद कहना अपने आप को, अपने अपने दोस्तों को कि ये है हमारा साथ, द ईयर ऑफ द सिटीजन। वंस यू डू दैट, मान लो कहे ईयर ऑफ द स्टूडेंट, बात कुछ और। नाउ दिस you are citizens here. As a student, but you are citizens, so that is what NSS stands for. NSS can do plenty, and more it does, you start saying, man, ये तो पता ही नहीं होता रुके कहाँ, इतना कुछ करने को होगा। आप ऐसा दिमाग खोल दो, अपना दिल खोल दो, और फिर देखो देश बदलेगा। और अगर सारे IITs ये करने लगे तो वाह, अगर सारे IIT स्टूडेंट्स ही बदल जाए तो वाह, एक IIT मूवमेंट ही चल पड़े तो वाह, इट कैन बी। लेकिन आपको खुद को अपने आप को सुनाना होगा, आपकी लीडरशिप को आपको बताना होगा, और आपको ऐसे जैसे पागल लोगों को, मेरे जैसे लोगों को बुलाना होगा कि ये पागलपन आपने कैसे किया था, और ये पागलपन का मंत्र दे दो जिसमें हम भी पागल रहे। हम किस चीज में पागल रहते हैं? इस खुशी कि हम सेवा के काबिल हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें सेवा की, जब तक एनर्जी है तब तक सेवा है, जब एनर्जी डूब जाएगी तो व्हील चेयर पे बढ़ाओगे तो व्हील चेयर पे आएंगे, जब तक सांस है आपको बताने आएंगे। तो मेरी प्रार्थना ये है, यूनिक बनो, IIT का भी नाम रोशन करो, अपने अपने परिवारों का भी नाम रोशन करो, अपना नाम भी नचाओ, लेकिन सबसे ज्यादा है अपने आप को सेल्फ रिवॉर्ड करो। It's like a reward system. Once you do that, your years ahead will be very progressive and very productive, and you will never have to go for well-being. You will make others well-being. Thank you and very much. Thank you so much, ma'am, for this incredible, inspiring and motivating address. अल्तमेश जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि आपने इतनी मदद की है और आज वो जीवन में बहुत बेहतर कर पा रहे हैं, इसके लिए सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।
one of the greatest takeaway for me and for all of us is that आपने बताया कि बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के आपने खुद से नवज्योति संस्थान कैसे शुरुआत की और कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। एंड एक लास्ट चीज़ मैम, 2047 में आप कहीं नहीं जाएंगे, you are one of the most fittest person of this country whom I know. And as we say in our Gen Z language, ma'am, आपका aura ही different है. Like to invite on stage Miss Premlata ma'am, and from IIT Delhi I would like to invite Professor Pradyuman, Associate Dean of Student Activities. ये felicitation ceremony में हम जो वस्तु मैम को दे रहे हैं वो बहुत ही खास और स्पेशल है। इसके बारे में मेरी कॉलीग मिथिला जी और बताएंगी आप। ये पेंटिंग मैम हमारी एक वॉलंटियर है उपाय संस्था की, जिन्होंने हाथ से बनाई है एंड आपको प्रेजेंट करने के लिए रूपाली जी, शी इज नॉट हियर टुडे बट उन्होंने ये भेजा है रूपाली मैम के लिए। मैं भी लेती हूँ। Would you take your selfie and post it in my handle? Now, would you all clap then? Yes. 1, 2, 3. Like, we got it. Thank you so much. Just want to make an announcement that इस बार हमने किसी भी गेस्ट्स के लिए मोमेंटोज एंड ऑल नहीं लिए हैं, बट इन प्लेस ऑफ दैट हमने एक बच्ची को स्कॉलरशिप देने का सोचा है इन द नेम ऑफ डॉक्टर किरण बेदी एंड अदर गेस्ट्स। सो आई रिक्वेस्ट सुमन from Noida Center to please come up on the stage and receive her scholarship.
बच्चे लोग यहाँ जाइए नीचे की ओर। One more time, clap. 1, 2, 3. Sorry, what did you say? Oh yeah, we can. How do you want to have it? So all the audience can come this side. This is the place. Get the staff team leader, and you can have call them group wise. You can stand here. Keep standing. Yeah. This is the way. So call them group wise. You can call those students. You can call them. What you can do is, if you want to go to that, then you can all group here and you can stand here. Yes. Is it possible? Okay, come. Those of you who wish to have this. Wait for first lot, please. Then we can have a good one. And you see how tech savvy she is. You know, like Gen Z is all Gen Z. She's like, is that okay? So keep the zoom so that, and you know what? Put the video and you move the camera this way. Wait a minute. Everybody will come. Cheers. Cheers. Yes. Yes. Go ahead. Please. Second lot, please. आप इस से निकल जाइए. First lot, bottom one. Second lot, please. आइए बंदा. वरुण सर है, सिद्धेश सर आप भी आ जाइए. Yes. It's a close up and the move the video. Yes. It will come about 10 seconds. Right. Everybody will get it. You have to move it a little. You were static. Yeah. Move it. Move it up till there. Correct. That's it. Then they'll all be there. Yes. Yeah, good. Now click. Thank you. The third lot. Thank you. It's like you're taking it like this. Yes. Just like that. That's good. Yes, it's so small. Yes. You like it like that. Yes. Ready? Both group ready? Ready? Please, थोड़ा सा आ जाइए. थोड़ा सा gap ले लीजिए इधर. Then the fourth part will come. And do the same thing I do. Right, right. Just move it. I can see whether it's and go slowly. She is a strict teacher, you know. That's the way to do it. See,
That's it. Just a few seconds and everybody's face comes. Yes. Please. Next lot, please. Fifth lot, please. Please do it fast. इनका photo. Ready? Please clear this. Yes, see, he's doing it so well. He's got a steady hand. Otherwise, the whole thing. Thank you. Thank you. Thank you a lot. Next lot, please. You want this? I know what to get you. I'm sorry. Only what gets you. Yes, please. There is a direction.